Hello, ma'am, can you hear me? I think we have to start our session. Let's start then. Today we have Afros and maybe other students will join in a little bit. Hi Afros, good morning. Hi, ma'am. Good morning, thank you for joining. Okay. Aditya, let's go ahead and start the session. Okay, so today will be a little different from the previous lessons. Today we'll just be doing a dictionary. So Afroz, can you practice saying this word? Can you try saying this word? D I C D I O N A R Y. Yeah, Dictionary. yeah, dictionary. So Afroz, before I go over it, do you know what a dictionary is? Afroz? Probably not. Okay, so I'll explain what is a dictionary. So a dictionary simply is a book that has all the words in one language and their definition. So डिक्शनरी अफरोज एक बुक है, किताब है जिसमें सारे शब्द कोई भी लैंग्वेज जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज के सारे शब्द और उनका मतलब बताते हैं आपको, उस बुक को हम डिक्शनरी कहते हैं. कैन यू ट्राई टू से would you like to try and say Afroz dictionary? Dictionary. Dictionary. Go ahead, Aditya. yeah. So just to review this word definition right here, a definition is just the meaning of a word. What does that word mean? That's what a definition is. So, Afroz, इंग्लिश में ये जो वर्ड है डेफिनेशन, डेफिनेशन इसका मतलब होता है कोई भी शब्द का मतलब. डेफिनेशन मींस मतलब, मतलब कोई भी शब्द का मतलब जो होता है उसको हम इंग्लिश में डेफिनेशन, डेफिनेशन बोलते हैं. गो अहेड आदित्य. Okay. So today we will be looking at some new words and some words we've already reviewed. But every word that we look at today will be a verb. Afros or Vansh, I see that Vansh joined. Hi Vansh. Does anybody want to tell me what a verb is? Yeah, Vansh. Good morning, Vansh. How are you? Fine. How are you, Vansh? Fine. Did you have a good week? How was your week? Private. Okay. Vansh, Yeah. remember in the last classes, we were looking at verb. Do you remember? आपको याद है verb क्या चीज है? English में verb को कुछ याद है आपको? Yes. Okay, Yes. try. Go ahead, Aditya. Okay. So it's fine if we forgot. Let's remember. So remember that a verb is an action word. It is a word, yeah, action word. It is a word that describes action. Yeah, so that's what a verb is. It describes action. So today we'll be looking at some new verbs. So let's look at this verb right here. Afros, can you read this word?
T O O K. Cook. Yeah. Afros, do you know what cooking is? What cook is? अफरोज, कुक का क्या मतलब होता है इंग्लिश में? आप हिंदी में भी बता सकते हो हमें. कुक, कुक का मतलब जानते हो? कुक. आपकी मम्मी किचन में क्या करती हैं? Yes. हम्म? You. कुक करती है ना? गो अहेड आदित्य. So let's look at the definition of this verb cook. Remember, definition is just the meaning of a word. So the definition of cook is make food by mixing and preparing different foods and different ingredients. ओके, सो इंग्लिश में जब आप ये वर्ड देखते हो कुक, कुक मीन्स खाना बनाना. जब आप खाना बनाते हो देन यू आर कुकिंग. फॉर एग्जाम्पल, योर मदर कुक्स इन द किचन. आपकी मॉम, आपकी मम्मी किचन में खाना बनाती है. कुक मीन्स टू मेक फूड. गो अहेड आदित्य. So let's look at the second verb. We haven't looked at this verb yet. Does anybody want to try reading this, Afroz? Vanch? Pati. Dahi. E E R R Y. Dahi. Carry. Yeah, that's right, Afroz. So, does anybody know what carry means? Afroz or Vanch? कोई ट्राई करना चाहता है? अफरोज या वंश, ये कैरी का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? जो ये वर्ड होता है कैरी, CARRY, इसका क्या मतलब होता है? कोई ट्राई करना चाहता है? वंश, वुड यू लाइक टू ट्राई? Yeah. So we can just look at the definition. So the definition is a bit hard, but let's make it easier. So definition is support the weight of. Do you see in this picture, this person in the red shirt is carrying two bags, one in his left hand right here and one in his right hand. So the person is supporting the weight of each bag, right? So that means they're carrying the bag. ओके, सो इंग्लिश में जो ये वर्ड है कैरी, हिंदी में इसको कहते हैं उठाना. अब जैसे मैंने ये वॉच, मैं ये वॉच को उठाती हूं, दैट मीन्स आई एम कैरिंग द वॉच. कैरी, आई कैरी द वॉच. ओके, जब कोई चीज को आप उठाते हो, पकड़ते हो और इधर से उधर लेके जाते हो, तो आपका इंग्लिश का वर्ड होता है कैरी, CARRY. लेट्स गो अहेड आदित्य. Okay, so we've looked at this verb before. Afroz or Vanch, do you want to read this verb? E R E A M. Keen. Keen. Team. Yeah, dream. Keen. Yeah, that's right. Afroz, do you know what dream is? What dreaming is? Remember, we went over this a little while ago, but maybe you still remember? Or Vanch, do you know what dreaming is? Dream? Okay, we can just look at the definition. Team sapne. Yeah, that's right. That's right. Correct.
Correct. Dream, sapna. Yes. Go Mhm. ahead, Aditya. So the definition or meaning of dream is thoughts that happen in a person's sleep. So when you go to sleep at night, you obviously have thoughts, right? And you're thinking. So all these thoughts and what you're thinking is what's called a dream. Yes. So Afroz and Vansh, इंग्लिश में ये जो वर्ड है ड्रीम, DREAM, इसको हिंदी में कहते हैं सपना. करेक्ट वंश. एंड आज हम सारे एक्शन वर्ड्स कर रहे हैं, वर्ब्स कर रहे हैं, जो वर्ड्स वर्ब्स वो वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड्स जिसमें आप कुछ कर रहे होते, जब कुछ चीज कर रहे होते हो वो एक्शन होता है और उस तरह के वर्ड को हम वर्ब कहते हैं. आज हम सारे एक्शन वर्ड्स कर रहे हैं. So yes, dream means sapna. Correct. Thank you, Vansh. Let's go ahead, Aditya. Yeah. So as you see in this picture, this boy is sleeping in his bed, but he's dreaming about gifts and balls and trains. So this verb we haven't seen before. Afroz or Vansh, can you try reading this verb? In E B I E E it Bite. Bite. So the way you say this word is bite. So it's actually something that we all do. So let's look at the definition. Someone using their teeth to cut something. So whenever we eat, right, in this picture, this boy is biting into this chicken piece so he can eat it. Yeah. Okay. So you, yeah. ये जो इंग्लिश का वर्ड है बाइट, वंश कैन यू आप ट्राई करो इस बाइट को रीड करना. इसके लेटर्स बताओ मुझे क्या हैं. बाइट को क्या लेटर्स हैं बताओ, इसको स्पेल करो. ट्राई करो. ओके, ये है BITE एंड ये जो वर्ड है बाइट, बाइट इस वर्ड को हिंदी में बोलते हैं चबाना. जब आप किसी चीज को चबाते हो, जैसे खाना चबाते हो, उसको कहते हैं बाइट. ओके, सो वंश हिंदी में क्या बोलते हैं बाइट को? अफरोज आप ट्राई करो, हिंदी में क्या बोलते हैं बाइट को? चबाना. चबाना. यस, करेक्ट. लेट्स गो अहेड आदित्य. करते हैं Yeah. So, Vansh, can you try spelling this next word? This one right here. This one that I'm circling. Just spell. F A L L Fall. Yeah, thanks, Afroz. So fall is a verb. It's an action, right? But Afroz or Vansh, do you know what this word fall means? What does it mean? ट्राई करो अफरोज या वंश, आप हिंदी में बता सकते हो. अगर आपको पता है फॉल क्या होता है तो आप हिंदी में भी बता सकते हो. व्हाट इज फॉल? यस, करेक्ट, करेक्ट. गिरना. करेक्ट. Aditya, go ahead. Yeah. So in English, the meaning of fall is when a person loses balance and goes down. It could be down to the floor or down anywhere. So we see in this picture that this person slipped and now is falling towards the ground, right? He lost his balance and then is falling. So fall
represents this action that we see in this picture? To जब आप इंग्लिश में ये वर्ड देखते हो fall, FALL, इसका मतलब गिरना. जब कोई गिर जाता है, so अगर मैं गिर जाऊं, I fall down. Fall मतलब गिरना. Let's go ahead, Aditya. So, Afroz, can you read this next verb? This one right here. Yeah, LAUGH, laugh. So we've used this verb before in a class, maybe 2 classes ago. But what does this word mean? So the definition of laugh is sounds someone makes when they find something funny. So when you find something really funny, you and this boy in this picture start laughing, right? It's something that we all do when we find something funny. Okay. So, Afroz and Vansh, English में ये जो word है laugh, LAUGH, वंश इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आपको कुछ आप ट्राई करना चाहते हो? laugh को हिंदी में क्या बोलते हैं? ट्राई करोगे? Yes. laugh, yes. laugh मतलब हिंदी में हंसना. जब आप हंसते हो, जब आप laugh करते हो, जब आप हंसते हो, that means English में वो word को बोलते हैं laugh. हिंदी में laugh बोलते हैं हंसना. जब हंसते हो, that means laugh. Go ahead, Aditya. Okay. So, oh, we haven't seen this verb before, and it's said a bit weirdly. But Afroz, can you spell this word? E L I M B. Climb. Yeah, Vanch, can you also say this word? Climb. Channa. Yeah. In English though, can you say this word? Climb. Climb. It's fine. We can practice it later. So, what's the meaning of this word climb? So, the definition is when a person uses their body to go up. So, look at this picture right here. You see this boy in the orange shirt climbing this ladder, right? He's using his body to climb this ladder and eventually he'll get to the top. So climb represents the action of him using his legs and using his arms to climb this ladder, right? With a bunch of steps right here to go all the way up. Okay. So ये जो word है English में climb, CLIMB, वंश ने बिल्कुल ठीक बोला. हिंदी में ये होता है चढ़ना. तो अफरोज, आप कहीं चढ़े हो? कभी सीढ़ियों पे चढ़े हो या कहीं पे चढ़े हो? बताओ, कहीं पे चढ़ के गए हो आप? चढ़ा है मैं. नहीं. अच्छा, तो जिनका घर फर्स्ट स्टोरी पे होता है या सेकंड स्टोरी पे होता है, वो सीढ़ियों को चढ़ के ऊपर जाते हैं, राइट? तो चढ़ना, जब आप चढ़ते हो, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइंब. CLIMB. Go ahead, Aditya. Yeah. So when you see steps in a building and you need to get from the lower level to the higher level,
you have to climb those steps. So we've seen this verb before. Vanch, can you try spelling this? Spelling this verb? Dance. A-N-C-E. Dance. Yeah. Both, yeah. Yeah. Both of you got it right. Dance. So No. Yeah. yeah, that's right. So the definition of dance is moving to music. So we can see in this picture, right? These two people hear the music and are moving. So we say that they are dancing. So ये जो इंग्लिश का वर्ड है डांस, DANCE, इसको हिंदी में नाचना. अच्छा, म्यूजिक क्या होता है? जब आप लोग कोई गाना लगाते हो, जैसे आपके घर में अगर कोई गाना बजता है या वंश आपके घर में कोई गाना बजता है, तो जब आप नाचते हो तो that is dance. Dance means नाचना. Correct, Vansh. Thank you. Let's go ahead, Aditya. Okay. Okay, we've seen this verb before. Afros, can you try spelling? M-P. Jump. Jump. Yeah. Vanch, can you also try saying this word right here? Vanch, can you try? So the way we say this verb is jump. J-U-M-P. Jump. Jump. Good now. Yeah, that's right. That's right, Vanch. So let's look at the definition. Someone using their legs to lift themselves. So do you see in this picture, this boy is in the air? He's off the ground, right? So the way he got off this ground is that he jumped. He used his legs and jumped. Okay, so ये जो इंग्लिश का वर्ड है jump, J-U-M-P, ये बिल्कुल वंश ने ठीक बोला. हिंदी में इसको कहते हैं कूदना. जब आप कूदते हो जमीन से ऊपर कूदते हो, that is jump. Okay, Afroz, when you jump, आप जमीन से ऊपर उछल के कूदते हो. Thank you, Vansh. Let's go ahead, Aditya. So we haven't seen this verb before, but it's a very short word. So Vanch, can you try spelling this verb or saying it? Or Afroz, do you want to try spelling this? S-U-G-E. Okay. Hug. Yeah, hug. So you might do this with your parents or people that you love, but the definition of hug is two people squeeze each other with their arms. So as we see in this photo, the girl in the purple shirt and the guy in the red shirt are hugging because they're squeezing each other with their two arms. And hug is an action. This is an action, right? So this is a verb because verbs are action words. Okay, so hug जो है H-U-G, इसको हिंदी में काफी बारी बोला जाता है झप्पी मारना. जैसे आपकी मम्मी और आपके पापा आपको हग करते हैं प्यार से, ठीक है, झप्पी देते हैं, उसको कहते हैं हग. ठीक है, इंग्लिश में हग, हिंदी में बहुत बारी हम लोग हग को बोलते हैं झप्पी देना, जैसे आपके मम्मी पापा आपको देते हैं काफी बारी. ओके, लेट्स गो अहेड, आदित्य.
So, so now we see this word. Vansh, can you try saying this word? Yes. Yeah, kick. Afros, can you try spelling this word? K-I-C-A. Yeah. Yes. So the definition of kick, or the meaning of kick, is hit something with your foot. So when we play football, we kick the ball with our feet, right? That's how we play the game, to score a goal or to pass to another person. So the action of using your foot to hit the ball is what we call kick or kicking. तो अभी मुझे किक का हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा, पर आप पिक्चर से देखो, जैसे आप अपने लेग के साथ बॉल को हिट करते हो, तो उस एक्शन को कहते हैं किक, ठीक है? एंड जब मेरे को याद आ जाएगा हिंदी का वर्ड किक, तो आई विल कम बैक टू दिस वर्ड. ओके, लेट्स गो अहेड आदित्य. हाँ बताओ, वंश आप बताओ, आपको याद आ गया? हाँ, लात मारना. यस, करेक्ट. करेक्ट, करेक्ट, लात मारना. Thank you, Vansh. Kick means लात मारना. Correct. Yeah. So the next word is a verb that we haven't seen before. Afros, can you try spelling this verb? L-I-D. Lie. So the way we say this verb, L-I-E, is lie. So what's the meaning of this verb lie? Well, lie means when someone doesn't say or write the truth. So if we remember what the truth is something that happened, right? Something that actually happened. So a lie would be when someone says something that happened, but it did not actually happen. In real life, it did not happen. But they said they did, so they are lying. Okay, so ये जो वर्ड है lie, अब वंश आपको तो बहुत आता है, हिंदी के सारे वर्ड्स आते हैं. ट्राई करो, ये lie को हिंदी में क्या बोलते हैं? ट्राई करो, शायद आपको आता है ये वर्ड lie. Banana. हाँ, Banana. बनाना. हाँ, झूठ बोलना. lie हाँ. means झूठ. हाँ, झूठ. और ट्रूथ का मतलब होता है, ये जो लास्ट का वर्ड है ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ का मतलब होता है हिंदी में सच. तो जब आप सच नहीं बोलते तो आप झूठ बोल देते हो, और झूठ मतलब इंग्लिश में लाई. ठीक है अफरोज, हिंदी में क्या बोलते हैं लाई को? ट्राई करो, हिंदी में क्या होता है लाई? Jata. Jata. झूठ बोलना. झूठ बोलना. लाई मीन्स झूठ बोलना. लेट्स गो अहेड आदित्य. So we haven't seen this verb before, but a lot of people do this, right? So Afros or Vansh, do you know what this word is? D-R-I-V-E. Yes. Right. Kick. Drive. Yeah. So the way we say this verb is drive. D-R-I-V-E, drive. So the definition of drive is controlling a car, right? So we see this person in their car and they're controlling this car, right? They're controlling the wheel. They're using the accelerator to go faster or slower. They're using the brake.
They're controlling a lot of parts of this car, right? So we say that they are driving. And when we drive, we want to go, we use the car to go to places that are very far. ओके वंश ट्राई करो ड्राइव को हिंदी में क्या बोलते हैं ट्राई करो ड्राइव बनाना 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 चलाना गाड़ी चलाना यस चलाना कैसे लगे गाड़ी एग्जैक्टली तो जब गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग यस ड्राइव यस Correct. Yes. Good job, Afroz. Good job, Vansh. Thank you. Aditya, let's go ahead. So we've seen this verb before. Vansh, can you try saying this verb? R U N Yeah, that's right. That's right, Afroz. Run. So the definition or the meaning of run is when someone moves faster than walking, right? So when we walk, we're not going that fast. But when we run, we go much faster, right? So when do we run? We run when we want to go to places faster to do it for exercise, or when we're playing games like football or any sport. Correct. Very good, Afroz. आपने हमें पहले ही बता दिया ये क्या चीज है. Good job. Excellent. Run मतलब दौड़ना. जब हम दौड़ते हैं तो इंग्लिश में उसको कहते हैं run. दौड़ना. ठीक है? That's very good. Afroz, thank you. Let's go ahead, Aditya. So we've seen this verb before. It's a bit longer than the other words. Vansh, can you try saying this verb? Yeah. Drink. Drink. Yeah. So Vansh talked about pani or water. So the definition. Yeah. Yeah. So when we drink, as we see in this picture, we're taking a liquid like water into your body through your mouth, right? So we see that this person is drinking water and he's taking this water into his body by using his mouth. तो आप दोनों ने हमें करेक्ट बिल्कुल करेक्ट बताया बिल्कुल सही चीज बताई ड्रिंक मतलब पीना ठीक है जैसे अफरोज ने हमें दिखाया था ग्लास के साथ आप कुछ भी पीते हो कोई भी लिक्विड पीते हो पीना मतलब ड्रिंक गुड जॉब थैंक यू अफरोज एंड थैंक यू वंश लेट्स गो अहेड आदित्य Yeah, so we've seen this verb before. Afroz, can you say this verb? Eat. खाना खाना खाते हैं Yeah. So this is very similar to drink, right? But instead of taking a liquid, it's taking food into your body through your mouth. So we see this girl eating food, right? She's taking food into her body through her mouth. So we call that eating. Okay, so both Vansh and Afroz आप दोनों ने बिल्कुल ठीक बोला eat मतलब खाना so Afroz आपको सबसे अच्छी चीज खाने के लिए क्या लगती है मुझे याद है आपने लास्ट टाइम मुझे बताया था सबसे अच्छी चीज खाने को क्या लगती है आपको आपकी फेवरेट चीज बताओ अफरोज वंश आप बताओ हाँ अफरोज आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था आपको खाने के लिए सबसे अच्छी चीज लगती है बिरयानी मुझे याद है ठीक है बिरयानी और वंश आपको आपको सबसे अच्छी क्या चीज लगती है
Yeah, ma'am. हाँ, Time is not. yeah, correct. Okay, so eat means खाना. खाना खाते हैं. Yeah, Eat. हाँ, yeah. okay. Very good. Let's go ahead, Aditya. Okay, so this is a new verb. Vansh or Afros, can you try spelling or saying this verb? And Ma'am. A R L L L L Learn, right? Learn. So the meaning of learn is a bit hard. So it says to gain knowledge of information or skill, right? So we see in this picture that this person is reading all these books and writing all these papers, right? They're gaining all this knowledge of information. So we say that they are learning. So, Vansh and Afroz, ये जो word है learn, LEARN, इसको हिंदी में बोलते हैं सीखना. जैसे आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? बताओ. क्या सीख रहे हैं वंश? आज हम वर्ड सीख रहे हैं. यस, करेक्ट, बिल्कुल ठीक. वर्ड सीख रहे हैं. एग्जैक्टली. इंग्लिश में हम लोग वर्ड सीख रहे हैं. सीखना, जब सीखना इंग्लिश में कहते हैं लर्न. LERN. टुडे वी आर लर्निंग वर्ड्स. करेक्ट वंश. थैंक यू सो मच. लेट्स गो अहेड आदित्य. So this is a new verb. Lose. Yeah. It's not loser, it's lose. Lose. So the way we say this word is lose. LOSE. So the meaning of lose. Yeah. So it's unable to find something or getting beat at something, right? So when someone, if you're playing football and you lose, yeah. So if you're playing football and you lose, right? They score more goals than you. You lose, right? You lose the game. Also, yeah. So also, as we see in this picture, right? We see this guy. We see this guy, and he doesn't know where his bag is, right? So if he's not unable to find his bag, we say that he lost his bag. So ये जो वर्ड है lose, LOSE, इसके इंग्लिश में ये दो तरह से यूज होता है. एक मतलब होता है lose का कि आप कोई गेम हार जाते हो. हारना means lose. The other meaning of lose is जब कोई चीज खो जाती है, आप उसको ढूंढ नहीं सकते. जैसे आपका जूता खो गया, आपकी पेंसिल खो गई, आपका सॉक्स खो गया, आपका कुछ भी, जब कोई चीज खो जाती है उसको कहते हैं लूज. सो इंग्लिश में लूज के दो यूज होता है. एक होता है जब हार जाते हो तो लूज. दूसरा यूज होता है जब आप कोई चीज खो जाते हो, जब कोई चीज ढूंढ नहीं सकते, उसको कहते हैं लूज. ओके, सो आदित्य, आई थिंक Rakhi, I think we have another, what, 2, 3, 4 more minutes left? Yes, ma'am. 4 minutes left. Okay, so let's introduce a word, Aditya, like hold, and then maybe we can pick up some object and hold it. Me from my table, you from your table, and Vansh and Afroz from their table. Okay, so
and Yeah. I will explain the word in Hindi. Hold. HOLD. वंश एंड अफरोज होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, जब आप कोई चीज को पकड़ते हो. अब जैसे मैं इस वॉच को होल्ड कर रही हूँ, इसको मैं पकड़ रही हूँ. होल्ड मीन्स पकड़ना. So Aditya, would you like to hold something off your desk and display it? Yeah. So here I'm holding a bottle, right? This it's empty, but I'm still holding it, right? It's in my hand and I'm carrying or holding this bottle on my table. अफरोज, आपके पास कोई है, कोई चीज आसपास जो आप होल्ड करके हमें दिखा सकते हो? देखो, कोई पेंसिल, पेपर कुछ है? कुछ भी? Yeah, Vansh is holding a pencil or a pen, Okay. maybe. Let's see. Yeah. Yes. Correct. Yeah. Pen. You are holding a pen. आपके हाथ में जो चीज है उसको आप होल्ड कर रहे हो, वो पेन है. Thank you so much, Vansh. And Afroz, you try to. आप भी try करो कुछ होल्ड करना. Hold. Good. के आसपास कुछ भी है उसको पकड़ के दिखाओ, जो भी कुछ रखा हुआ है. कुछ भी रखा है ना, चाहे कोई नोटबुक रखा है, चाहे कुछ भी रखा है, ग्लास रखा होगा, वो भी उठा के दिखा सकते हो. कुछ भी देख लो. Yes. Yes. Excellent. Thank you, Afroz. So जब आप उस चीज को दिखा रहे हो, उसको अपने हाथों में पकड़ रहे हो, उसको कहते हैं होल्ड. इंग्लिश में जब अपने हाथों में कोई चीज पकड़ते हो, उसको कहते हैं होल्ड. Hold. Yes. Holding a pen. Yes. Yes. Very good. Okay. So thank you, Afroz and Vansh. Thank you so much for participating today. आप दोनों ने बहुत अच्छा, you did a wonderful job. हमें हिंदी में भी आपने वर्ड्स बताए, और वंश, जो मुझे भी नहीं पता था हिंदी में, आपको पता था. That's wonderful. That's really good. So बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो, बहुत ज्यादा अच्छी आप लोग इंग्लिश को पकड़ रहे हो, लैंग्वेज को. That's excellent. You are doing a wonderful job. So अब होमवर्क में मुझे आप 5 इस तरह के वर्ड, नहीं 5 नहीं, मुझे 3 वर्ड्स लिख के दे देना पेपर पे, जैसे आपने लास्ट टाइम किया था. सभी ने मुझे ग्रुप में, साईराम ग्रुप पे, कोई 3 वर्ड्स जो एक्शन वर्ड्स है, वर्ड जैसे लिफ्ट, ड्रिंक, यॉन. अभी अफरोज को नींद आ रही है तो वो यॉन कर रहा है, राइट? तो यॉन मतलब कोई भी 3 वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स मुझे पेपर पे लिख के साईराम ग्रुप पे प्लीज भेज देना. ओके, सो दैट इज द होमवर्क. Thank you everybody for joining. Thank you so much, Afroz and Van. Can we say thank you and can we say goodbye to everybody? Thank you, Afroz. Thank you, Vansh. Thank you. Thank you, Aditya. Thank you, Aditya. Thank you Thanks, so much. Rocky. Thank you, ma'am. Thank you, Raki, and thank you everybody for joining. Thank you, Afroz, and thank you for giving so many correct answers. And thank you for participating today. Okay? Bye. Thank you. Good to Bye. Okay, Bye. ma'am. Bye. Pooja, Thank thank you. ma'am. ये बाय भी एक्शन वर्ड है, इसको भी लिख के दे. Okay. Bye. Bye. Thank you, Pooja. Bye, Thank ma'am. you. Thank you, Thank everybody. you. Have a wonderful weekend. Enjoy your weekend. Thank you, Raki. Bye. Okay, Thank you, thank you, everyone, for Aditya. joining. Ah. Aditya, thank you. Aditya, I think Lekha is saying thank you. Bye, everybody. Bye.